Pali, how are you? Welcome to my channel and hi, कैसे हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. So this is a very special video for me because today I have Rupali. She is basically from Delhi, but now she lives in Canada. बाकी हम अब रूपाली जी से सुनेंगे. So रूपाली जी, please give a brief intro about yourself. Tell us, my students and viewers. जी, बोलिए जी, बोलिए. बोलो प्लीज. Okay. So hi, I'm Rupali. Um, I'm from Delhi and यहाँ पे मैं ओंटारियो में हूँ. Like पहले I was in Kingston. I came here as on a study permit as a student. So after Kingston, I moved to Ottawa for my work. So that's it. Like I was in a field of special education from past 6 7 years. Like I did my graduation in special education, then my masters in special education, then I came here. Okay. तो सबसे पहले आप बता सकते हैं what is this special education? I think most of the viewers and students do not know about this. What is special education? Special education is basically a term to teach special needs children, like who has disabilities or disorders. Like I guess you have heard a lot of times, like children with learning disabilities, autism, like hearing impaired or visual impaired. Like it is basically divided into two terms, like sensory impairment and developmental impairment, Okay. like developmental disabilities and sensory disabilities. So sensory like can be included visual impairment and hearing impairment, and developmental is a lot, like learning disabilities, down syndrome, intellectual disabilities, autism, and all of those. Okay. So yeah, cerebral palsy. So So, this is a special education, like where you are a educator, like special needs educator or special educator, like and teaching those kids. okay. So the first question that arises in my mind is why this field? It's a very unique field, especially from where I am, as I'm from Punjab. यहाँ पे तो इतना कॉमन नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं है कि इसके बारे में भी कोई कोर्स होता है. तो ये आपने चूज क्यों किया? मतलब घर में था, कोई कोई नोन में था, या कोई मूवी देख ली तारे ज़मीं पर? क्यों? तो आई गेस ये मूवी आई भी नहीं थी. अच्छा. आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो. नहीं, तारे ज़मीन बट इज़ अ वेरी ओल्ड मूवी. मूवी तो आ गई होगी तब टाइम में. आई वाज़न्ट. शायद आई होगी. हाँ, बट फिर आपकी मोटिवेशन क्या थी? तारे ज़मीन पर तो नहीं है, सो ऑब्वियसली. तो व्हाट वाज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दिस कोर्स? It's like no one in my family has did this course, like has done this course earlier, and no one told me yet that this is a course exists or like that. Some like I went. Okay, I'll tell you the brief thing. I from in when I was in class 11th, I went to Blind Relief Station, which is in ITO, ओके. Delhi. So वहाँ से I went there as a scribe. So scribe is a person who, like, who writes the examination papers or whatever, like the paper for children with visual impairment. ओके. So to write a 12th class paper, and I was in 11th. So हुँ. what they do as a scribe, you have to be 1 or 2 years younger than the person who are giving board exams. So they were also doing like CBSE board and everything. They were all of like 22 years, 25 years, 28 years, or like that. And even I went there after like a couple of years. I don't know when, but I went there as an intern. Like it wasn't a part of my university internship, but I was free for like 1 or 2 months. So I was like, why to waste that time? I just go there like daily for as a volunteer, as a as an internship. Yeah. So then I got to know, okay, this is the same place I used to like when I was here in my class 11, because that time I didn't know that okay, this is a blind relief station or like that. Only those scenario was in my mind that okay, they are special needs children, they are not much educators. People always choose teaching as a profession. Like I knew that I want to be a teacher, but I didn't know that these fields exist. So I like it was in my mind that okay, people do after psychology honors or like whatever their graduation, and it's like this only in India. They do graduation and then they do like 2 years course or
like 3 1 year course or like that, either diploma or masters or whatever, like B.Ed or M.Ed. But Amity was the only university which was providing 4 years course, which has all the disabilities. Like in 4 years you will learn about the learning disabilities, autism, like all the like you'll learn sign language, you'll learn braille, you learn all the what are the disabilities, you learn about mental retardation, which is now known as intellectual disabilities. So that is why I was so, excited that okay, every semester, every year I'm going to learn new things. Okay. Like so for the whole 4 years we studied that. So So yeah. I think it would be, how difficult or easy was to convince your family for this course? Because in my view, this is a very different course. मैंने तो, you are the first person who I know who works and studied in this field. So आपने बताया आपकी फैमिली में कोई नहीं था, तो इसमें आपकी एंट्री कैसे, वो तो मुझे आपका पता लग गया कि कैसे हुई, बट हाउ इजी इट वाज फॉर यू टू कन्विंस योर फैमिली कि मैंने ये कोर्स करना है? और मैं ये भी श्योर हूँ कि इंडिया में इसकी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है और इतनी आई थिंक सैलरी भी नहीं होगी इंडिया में, तो हाउ इजी इट वाज फॉर यू टू कन्विंस योर पेरेंट्स, और डिफिकल्ट? Let's keep salary a little aside. It was really difficult to convince my parents as well as my whole family. I live in a joint family, so like to convince either like elders or like family, like they were all against that. That Indian mindset, that stereotypical mindset that you are teaching those kids, you have your own future ahead. What if those family will go against of it or like that? So like it was really difficult. But like they were saying that yeah, I got a admission in symbiosis, BBA symbiosis, as far as remember. And like they were just like saying that do English honors, do BBA, do this, do that. And ये I नहीं was करना like, फिर? wanna go in a crowd, like भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था, मुझे थोड़ा अलग करना था. And I was like, नहीं, मुझे BBA ऑनर्स, BA ऑनर्स और ये सब कुछ नहीं करना. लाइक ओके। बीकॉम, मुझे सिर्फ मुझे इतना पता था कि हाँ कि आई वांट टू गो इन दिस फील्ड. But why not, like abhi, if I'm getting that chance to do like for 4 years, like I consider myself very lucky because if I'll do those 2 year course now, like visual impairment or that 2 years course, bachelor 2 years course or like that, I would be only particularly seeing just one field. And what if I didn't get a interest in that afterwards? But when I studied for all 4 years, like every single disabilities, I got to know, okay, this is the disability I want to go further. So that is why I chose masters, like the specific learning disabilities in my masters, because it was a little unique. Autism was also unique, but there were not much universities. For masters also, there weren't much universities, and plus all thanks to COVID. हम्म। So was to answer your question, sorry, my parents were not convinced earlier, but I just told them कि नहीं मुझे यही करना है, चाहे खुशी खुशी करो या करना रो के वही करो, यही but है। मुझे yeah. तो अब उनका रिएक्शन कैसा है ग्रेजुएशन भी they हो are गया? re- they are really happy with the like because when I came here I didn't want to change my field, and my mother also said that no need to change your field, no need to do any other course. But I guess if you have heard people saying that let's uh, like do any baking course or let's do any health administration or anything, हम्म। but not related to their own field. But I've given my 7 years, my 6 years to that field, so I wanted to do something related to this field. तो अब उनका खुद ही रिएक्शन बहुत पॉजिटिव में है कि like it's really good that you have chosen your own field, like तो दे yeah. हैप्पी बेसिकली। सो नेक्स्ट थिंग, Yeah. हाउ वी गॉट कनेक्टेड, वो भी आप बताइए स्टूडेंट्स को कि हाउ वी गॉट कनेक्टेड। I contacted you on like after my, I guess, graduation. Yeah, in 2022, when यस। I was like, I need someone to just evaluate my writings. I know I'm writing, but I don't know who will find my grammatical mistakes, who will find like I need a person to not only just giving the classes or like that, but also evaluating. Like
every single thing, and the way you evaluated, like, hats off to you. Like, it removed my stress, like, in those time period. So I was like, okay, let's do it. And you were not only checking my evaluation, the speaking classes and everything. Thanks to those speaking classes, now I feel like, okay, it has given me more confidence by time. So thank you. Like, it was my first time, like, attending those classes and giving a trial. Like, Obviously, first thank time I was a bit nervous for many students कि it's a life changing you. exam ना, mainly आपकी life बदल जाएगी, you will move to your dream country. So now Mm-hmm. my next question is why only Canada? आप कोई और country भी क्यों नहीं गए? Canada, Australia, America, UK, these are very four popular destination. Why Canada? यहाँ पे आपका कोई relative है, आपको यहाँ लगता है PR easy मिल जाएगी, job opportunities ज्यादा है, कि आपने जाना ही होता कि जी मैं तो जाना कनाडा, जैसे होता है, आपका क्या था? Actually, Canada, you already know, like, for PR, like 95% or 98% people come for PR only. हम्म, For other countries, it's like, I know a lot of times people just say that they migrate from Australia or New Zealand or like that just because they are not getting PR even after 5 years. Like, it's not, I'm saying everyone says that. Like, a lot of people say that, and even I've seen over here that people come from Australia, like, just because of this PR thing. And I felt like, if I'm going abroad, why not to, like, see, my course was really expensive, I would say. It was, जो लोगों की 2 साल की फीस होती थी वो मेरी 1 साल की थी. okay, क्योंकि which was again a hard decision for my family to take it, कि यही कोर्स क्यों करना है, why not other course. And मेरी महंगी इसलिए थी क्योंकि I already had a course, but for internship I have to give 5 lakhs or a few lakhs more extra to okay, get for into internship. it, which was unpaid. Like, for 4 months, they didn't pay me. I was working full time, 8 hours, like 8 hours per day, and for like 5 days. But there was no pay, there was no stipend, nothing. So, like, वो expenses bear up करना, और already India, mind में भी ये था कि India से extra, Very like, expensive. वहाँ it's already expensive. तो मुझे ये था कि I have to, like, spend more time, more seriousness, more growth in that country, which I have, like पैसे which I know in that, okay, मतलब there's a पीआर stable. भी मिल जाए, पैसे भी बचे हैं, सो दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। और आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पेशली आफ्टर कंप्लीटिंग आइल्स कि चलो आपको तो एक कोर्स का पता था, फिर यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट किया आपने कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, मतलब यू सिलेक्टेड इट और योर एजेंट सिलेक्टेड इट, व्हाट वाज द प्रोसेस, मतलब कैसे किया आपने सारा कुछ इसके बाद? So the thing started when, I told my agent कि मुझे ये कोर्स करना है. I हम्म, already searched on internet कि ये colleges हैं. University I didn't go for it because it's really expensive. हम्म, And plus the courses which I was seeing कि, like, let's say autism. It हम्म, was just one course. It was the same, like, uh, fee structure which has another courses. But I was like, if I've studied this course already, like हम्म, in my bachelor's, in my master's, because in either, like, even though I had learning disability in my master's, but we were like learning other courses, like, not courses, another disabilities as well. So मैं already autism का बहुत कुछ पढ़ चुकी थी. So I didn't want to be only specific towards autism, क्योंकि उसके बाद there's a rule that, you have to be in a similar field or like that. Not a rule, I would say, but people always prefer to go in that. तो I told my agent कि मुझे ये course करना है, ये, and not even like one course. I gave him like, I remember 5 or 6 courses, which were all related to disabilities, mental health, addictions. Maybe one was therapy course, then autism, then my course, which is therapeutic recreation. So here I changed my field. Like, I changed my age group, not a field. The field is same, like, working with people with disabilities and disorders, but the age group is seniors. I work with seniors now. ओके। Yeah. तो वन मोर क्वेश्चन व्हिच केम इन माय माइंड, प्लीज एनलाइटन मी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, सो प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड। ये डिसेबिलिटी रीजन क्या है, मतलब जेनेटिकली होता है, आपकी सराउंडिंग्स ऐसे कर देती हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम,
क्या है ये, रीजन क्या है मतलब क्यों होती है डिसेबिलिटीज, और इज देयर एनी क्योर फॉर दिस, कि दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस? आई वोंट से क्योर है, लाइक कि बिल्कुल आप मेडिसिन लोगे या कुछ एक बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी लाइक डिक्रीज विद इंटरवेंशंस जब बेबी डायग्नोस्ड हो जाता है। The causes we always used to, read, we always used to like discuss about. It's like it's not only the mother's fault, कि mostly stereotypical mindset ये होता है कि मदर की गलती है यहाँ पे भी कि कनाडा बेबी में भी, has इंडिया में तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, कनाडा में भी यही मतलब सोचते हैं कि इट इज फ्रॉम द मदर साइड। no, ओके they सो both are having the same mindset, and they both not only they as a parent, like as a family, they all accept very, like, in a positive way, that okay, it's like here you will see somewhere either they have no kids at all, or they have five or six. ओके। So when they have more kids, like somewhere it's all about examples. I'm not saying the theoretical part. It's all about, if you see more of the examples, the fifth kid or the fourth kid might be having like Down syndrome or like that, which can be recognized earlier, which can be सो during your pregnancy they can ओके। detect the person is having Down syndrome. Otherwise the causes are late birth cry, ओके। कि बच्चे का ऑक्सीजन की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ओके। बर्थ या कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, ओके। लाइक ड्यूरिंग और पोस्ट प्रेगनेंसी, या जेनेटिक भी होते हैं काफी रीजंस, जो कि हमें पहले पता नहीं चलते। सिर्फ डाउन सिंड्रोम का हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाता है कि द बेबी इज डाउन सिंड्रोम, बिकॉज द फेशियल फीचर्स हाँ, और लाइक वो चेंजेस हो बहुत जाते से हैं। हमारे, हाँ जी, टेस्ट भी हैं और जेनेटिकल टेस्ट भी हैं कि हम काफी हम पहले आफ्टर 31 or 32 years old, they always go through a clinical test. Like it is always suggested for a mother to go for a clinical test, um, to just recognize these things. Like, is a baby safe, or what will be the future outcomes, or like that. But otherwise, more consumptions of alcohol, I would say, is a ओके। major reason for children with disabilities and disorders, because चाहे आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की है या, और जरूरी नहीं है सिर्फ मदर ने की है, लाइक इट ओके। कैन बी अ फादर। सो मोस्टली हम जब केसेस देखते हैं या उनकी केस हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ते हैं, फैमिली हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं ओके फैमिली में अगर कोई था, इस हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ दैट, और अगर नहीं भी था तो मे बी अदर रीजंस तो है। आई मीन इट्स नॉट लाइक वन और टू रीजंस, इट कैन मतलब अमेलगमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके बाद मतलब ये इशू होता है। ओके, तो आपने इंडिया में भी देखा है, और इंडिया और कनाडा में क्या फर्क लगा? डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है इंडिया में ज्यादा, या कनाडा में? कनाडा में तो नहीं होगी आई गेस। मतलब हाउ पीपल, नॉर्मल पीपल ट्रीट स्पेशली एबल्ड किड्स, आई थिंक दे आर बुलिड मे बी, अगर नॉर्मल सिनेरियो में। आई थिंक बुली इज अ वेरी बिग इशू, और आई थिंक इंडिया में स्पेशली फ्रॉम वेयर आई एम, हमें तो पता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ना कोई स्कूल है, ना हमें कोई इतने इसके बारे में बताया जाता है। इन इंडिया दीज आर द लाइक न्यू न्यू टर्म्स, जो आई थिंक 3-4 साल में हमें पता चला है कि डाउन सिंड्रोम भी होता है कुछ। हमें तो एंग्जाइटी डिप्रेशन अभी पता लगना शुरू हुआ है, एंग्जाइटी अटैक्स भी होते हैं, पैनिक अटैक भी होते हैं। तो आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया इन इंडिया एंड इन कनाडा? मतलब इंडिया को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? ऑब्वियसली आई थिंक इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, स्पेशली इन दिस सिनेरियो। my main reason only was coming over here to get those technologies and stuff from, so that I can contribute something to India, because वहाँ पे अभी भी awareness, as you said, नहीं है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आई मीन कोई भी स्टेट हो, इंडिया और कनाडा इस फील्ड में काफी डिफरेंट है, लाइक इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटीज। पहली बात, इंडिया में हम अवेयरनेस को चलो हम साइड रख देते हैं, वो नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो सैलरीज होती हैं वो भी नहीं है इतनी, अच्छा। like I was working as a like I switched from special, already I got a lot of like I used to work in a lot of internships and everything, but I switched from special educator
to like assistant lecturer, just because क्योंकि वहाँ पे सैलरी ही नहीं है, like they हम्म, don't चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, यू नो दैट अगर हम 10 साल भी यहाँ पे काम कर लेते हैं, आर सैलरी विल इंक्रीज ओनली फ्रॉम दिस टू दिस. अगर वो प्राइवेट है, दे हैव टू like give salaries the like to the employees, fulfill their basic needs for the kids as well. तो वहां पे एक तो पहली बात आ जाती है माइंडसेट की भी बात. अगर हम एक्सपेंसेस को भी साइड रख देते हैं, जहाँ पे माइंडसेट आता है कि यू हैव टू जस्ट लाइक a few of the parents come like used to come and just say why he or she is not doing that, like just cure, like give him the cure or just कि वो उसको ठीक कर दो, मतलब एक्सेप्टेंस which नहीं is हो पा रही not. कि उनका ये इशू है, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है हाँ, थोड़ी सी। उनको लगता है कि अगर हमने स्कूल भेज दिया तो वो ठीक होके वापस आएगा, ओके एंड ओके। विद लाइक a few weeks, not even months, not even a year, like अभी भी वो गैप है. यहाँ पे इट्स टोटली डिफरेंट. यहाँ पे इट्स लाइक आई वाज इन अ लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड. हम्म, तो वहाँ क्या होता है, लाइक एलडीएसपी के अंडर स्कूल्स होते हैं, विच इज लाइक जस्ट एज सीबीएसई, हम्म, सीबीएसई हैज स्कूल्स. हम्म, तो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के अलग अलग स्कूल्स हैं, and you can be as an educational assistant over there, हम्म, and you will be with like I told them कि मेरी starting से field like special ed में रही है. तो they appointed me as special needs like as an educational assistant, but they knew that they have to send me to the special needs kid. तो कभी कभार it was like कि अगर आपका special setup नहीं है, like somewhere they used to send me for a special setup जहाँ पे मेरे पास दो बच्चे हैं, हम्म, and they both are having different disabilities, different symptoms, different everything, and I have to take care only those two. I don't care about rest of the people, like we all educators are sitting in the same room, but हर किसी के पास सिर्फ दो हैं. ओके In India, ओके, प्रेशर इतना where नहीं है। I have a sorry, दैट्स फाइन, in दैट्स फाइन। India, we had a full class. Like I have to take care of like 4 5 children or like that. तो यहाँ पे एक रेशियो है, and sometimes they send me like 8th class or 9th class to teach geography or to teach maths, and I was like मुझे खुद इतने साल हो गए maths पढ़े हुए, how can I teach geography? But still, when there was a like general teacher who was teaching the other kids, and I was responsible for the special kid, like two or three, like one or two, I would say. So as an educational assistant, like they send you with the special kid. तो मतलब यू कैन से कि इंडिया को अभी बहुत इम्प्रूवमेंट करनी है इस फील्ड में। एक तो अवेयरनेस, माइंडसेट, उसके बाद आई थिंक इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए तो Exactly. बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो मेन थिंग जो एवरीवन वांट्स टू नो, पीआर कैसे मिलेगी कनाडा में आज के टाइम में? आप 2022 में आए, आपने मास्टर्स की, नाउ यू आर इन वर्क परमिट, पीआर कैसे मिलेगी? क्योंकि सबको डर लग रहा है कि पीआर नहीं मिल रही, कनाडा वापस भेज देगा, वापस हम आ नहीं सकते, हमने पहले बहुत पैसे खर्च किए हुए हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस, और इज देयर एनी वे कि फिर हम डोंकी लगाएंगे अमेरिका के लिए? व्हाट यू विल रिकमेंड? Nahi. It's like I know, like PR is really difficult as of now, but I won't say it's impossible. आपको agents कभी वापस नहीं भेजेंगे इंडिया. If you are get connected with those agents, anyhow, चाहे आप work permit extension करो, चाहे आप like अपना वो आपका legal status maintain करके ही रखेंगे. वो आपका लीगल स्टेटस नहीं हटने देंगे. इफ यू आर कनेक्टेड विद अ specific agent, like, and you have trust on them, just leave on them because they know like at what time they have to do. मेरी खुद not PR, मेरी खुद फाइल वगैरह सब कुछ पंजाब की एजेंसी लगी है, CIC. So it was like, मतलब हम ये नहीं कहेंगे इट्स टू डिफिकल्ट, एंड हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हेल्थ केयर में है. देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स कि वहाँ पे पीआर है. चाहे आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर ले लो, चाहे आप हेल्थ केयर में, it's not only about personal support workers, PSWs. It's not only about nurses or doctors. Healthcare is really vast. कि उसमें इतना ह्यूज है वो कि आप एज अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, आप एज अ स्पेशलिस्ट, या आपको अगर सिर्फ 6 महीने या 12 महीने का कोर्स करके भी
you can get a permanent full time job. If ओके। not permanent, then you can get a temporary full time for sure. क्योंकि ये वाली फील्ड्स लोगों को पता ही नहीं होती, एंड दे ऑलवेज थिंक यार हेल्थ केयर, it's not only healthcare administrator. If like I used to see when I was in Kingston, and like almost all of my known ones were in healthcare administrator, whether they were a physiotherapist in India, or whether they were, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस वगैरह का होता है. The ऐसे basic तो is you have to increase your skills with your certifications, with your license. I agree. But जहाँ बात PR की आती है, you have to go like a little beyond your limitations, right? कि आपको certifications लेने हैं, आपको courses search करने हैं, आपको कैसे भी अपने agent से बात करनी है कि हाँ कि हमें ये um, yeah, I was saying कि सिर्फ हेल्थ केयर में ही नहीं है. आप अगर कंस्ट्रक्शन जाते हो या किसी भी और फील्ड में जाते हो, आई कैन गिव यू द लिस्ट कि श्योर श्योर। जिसमें आपका चाहे 1 साल का कोर्स है, हम्म एंड इफ यू हैव अ जॉब लेटर, उनको और कुछ मतलब नहीं है. Some people just change their like province as well. कि Ontario में it's really difficult, we know. After after studies, they just migrate from like Ontario to like Alberta or Saskatchewan or like that, and like most of the people does that, and it's not wrong. It's like for their PR, they just go, and it is very possible in ओके। Nova Scotia, Halifax or like that. It's possible. तो It's not that difficult. मतलब पीआर आप I बोल रहे know हो, that. सो यू आर गिविंग मोटिवेशन की पीआर मिल जाएगी। आप किसी हाँ. कोर्स में एडमिशन ले लो, शॉर्ट कोर्सेज कर लो, अपनी स्किल सेट इंप्रूव कर लो, देर सवेर मिल हम्म. जाएगी आपको। मतलब डू नॉट लूज होप। तो वापस तो नहीं भेज रहे, मतलब वापस तो कोई नहीं आएगा। जो बोल रहे हैं कि 49 मिलियन पीपल विल गो बैक, ऑब्वियसली नोबडी विल कम बैक। वो उनके हिसाब से आएंगे क्योंकि उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, राइट? हम्म बट आफ्टर expiration, you हम्म। can stay ओके। with your dummy work permit. You can show that okay, because आप employed status पे आ जाते हो, हम्म। and the moment you are on employed status, आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता. और जब तक उसकी डेट आती है, तब तक हो सकता है आपके स्कोर्स पूरे हो जाए पहले के, ओके या ओके। स्कोर्स डाउन हो जाए. इट्स पॉसिबल. मतलब पॉजिटिविटी आप दे रहे हो कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो आप ये बताइए कि 2025 में एज ए नॉर्मल स्टूडेंट जो प्लस टू है या ग्रेजुएट है, जिसने कोई इतनी स्किल सेट डेवलप नहीं की है, सिर्फ डिग्री है, पीस ऑफ पेपर है, उसके लिए कनाडा सही है इस टाइम 2025 में? या अगर वो आ भी बिल्कुल. रहा है तो क्या करके आए वो? सी, अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, पहले तो इन्होंने पहले से ही बोल दिया कि दे आर मेजरली फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर एंड स्टफ, राइट? हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर वाले बच्चों के लिए अभी भी जन्नत है कनाडा, यू कैन से। हाँ, आप है. इसी फील्ड में हो, आप। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आपने पहले की भी नहीं. अब यहाँ पे आई what I see, even the person is not into healthcare. If a person has just done like PCB or PCM from 12th, हम्म वो बच्चे सब लेट्स से सपोज उन्होंने PCB की है, they हम्म didn't have maths. हम्म। यहाँ पे कॉलेज फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराता है. अच्छा। दे जस्ट टेक 2 एग्जाम्स, इंग्लिश और मैथ्स. ओके। पहले तो, और वो बहुत इजी होती है. यहाँ की 11th की मैथ्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड मैथ्स, हम्म। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो उनकी एलिजिबिलिटी है टू ओके। टेक अ कोर्स ऑफ नर्सिंग. यहाँ पे वो फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे. अच्छा। ओके। वंस यू हैव गिवन योर एग्जाम, लाइक कॉलेजेस वगैरह वो एग्जाम लेते हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स का एग्जाम देना है. एंड 11th class is like 8th class, LCM, ओके, ये तो क्योंकि हमारे स्कूल में he सिक्स will सेवंथ go. एट्थ में करवाते हैं ये चीजें। हाँ जी. एलसीएम, uh, एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री। and they are also switching to nursing क्योंकि वहाँ पे health care, as you said कि health care जन्नत है. तो like after this classes free मिलेंगे and you are eligible for nursing course. ओके ओके, तो मतलब आप बोल रहे हो कि हेल्थ केयर इज अ गुड फील्ड टू चूज यार। हम्म. और कोई या. स्किल अगर सपोज ना, क्योंकि आपको पता है जब वीजा आता है उसके लिए टाइम लगता है। आइल्स, आफ्टर आइल्स इज अ जर्नी। जब आइल्स की जर्नी खत्म होती है तो वीजा की जर्नी स्टार्ट होती है, और आई थिंक वो ज्यादा खतरनाक है बिकॉज यू हैव टू वेट। उस टाइम या. पीरियड में क्या करें? मतलब अगर कोई बच्चा है वो क्या सीख ले? फ्रेंच सीख ले I या कोई would स्किल say सीख ले? क्या करे वो? French, I would say obviously learn it क्योंकि बहुत जगह काम आएगी. बेसिक फ्रेंच तो आनी चाहिए ओके, अगर उनके आनी चाहिए आप बोल पास रहे है. हो इस टाइम पे? हाँ, क्योंकि अगर ओके उनके पास टाइम, हर कोई यहाँ पे चाहता है कि वो बाइलिंगुअल हो, कोई भी अगर जॉब कर रहा हो. ओके। एंड आई वुड से, अगर इफ दैट इज अ गर्ल जो हम्म कि न्यू कमर है,
Mhm. just take a course of nail art extension, take a Mhm. course of beautician. यहाँ पे बहुत डिमांड में है कि इवन आई एम ऑन अ वर्क परमिट, आई एम Mhm. नॉट अ स्टूडेंट anymore, I'm not a PR Mhm. anymore, like PR yet, but still I go to a local person rather than a store, rather than a like salon, चलो because ओके। I know they charge me extra for the same service. हुँ। So it's like, why not to like save a little money जब आपको सेम सर्विस मिल रही सर्विस है. मिल रही है। For nail art extension, not only immigrants, like हुँ। even Canadians are, like everyone is really fond of. तो एक ब्यूटी थिंग, एक like as a salon beauty parlor or like that, it's really गुड like फील्ड in demand. एंड ओके तो एंड फॉर आपको हम्म एंड फॉर बॉयज़ लड़कियों के लिए तो आपने बता दिया कि मतलब ब्यूटी कोर्सेज़, नेल आर्ट, आई थिंक लेज़र ट्रीटमेंट भी बड़ी पॉपुलर हो रही है आई गेस। आई हैव सम हम्म स्टूडेंट्स हू दे आर डूइंग दैट। फॉर बॉयज़, फॉर मेन व्हाट दे शुड डू? क्या कर लें कि उनका काम बन जाए? हम्म कहीं ना कहीं you should know about a little garage skills, ओके। कि all of the sudden, क्योंकि यहाँ पे if you'll go for a service they are really expensive. हुँ। तो अगर स्नो स्टॉर्म हो रहा है, कुछ भी है, यो का एंड यू नो कि आपके कॉन्टैक्ट्स हमने बनाए हैं, क्योंकि everyone is connected to the groups. Like even though I was in Kingston, I was connected to a lot of groups. I still haven't left those groups, even though I'm staying in Ottawa. I'm in Ottawa's groups also, and you spread your, like, it's वो word of रेफरेंस mouth. बेस फिर हो जाता है ना, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है स्टार्ट। हाँ, if a person knows ki yaar, this is a person who knows about garage, who knows about cars, how to fix it in हुँ। emergency situation or like that, they can easily contact you rather than going to a, because sometimes the scams happens, हुँ, हुँ, हुँ। they will charge you more, which is not even a fault. ओके। So these skills are really important, like men's haircuts or like, because you will get a job easily, very easily. Communication is really important. आप, हम ये नहीं कहेंगे कि चाहे कोई भी जॉब है, छोटी है, बड़ी है, कुछ है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, या एक्स्ट्रा कोई भी छोटा सा सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, कि which is giving you more, like keeping you aside from a crowd and giving you more value. तो थोड़ी एज तो मिल जाता है आपको। हम्म ओके। सो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि जो कनेडियंस है, जो हम वीडियोस देखते हैं कि दे आर रेसिज्म थोड़ा हो रहा है यहाँ पे, या वो बोल रहे हैं कि गो बैक इंडियंस, वो आपने फेस किया, आपने देखा, आपके किसी नून के साथ हुआ, या कभी आपका कोई बैड एक्सपीरियंस कनाडा में इस पिछले 3-4 साल से? No, not at all. Like, uh, to be honest, when I was in Kingston, they were really friendly. They were हम्म। just like a family. Here also, I'm in a long-term care. हम्म। Like, अगर वो situation रहती, तो मेरे पास किंगस्टन में, टचवुड, मेरे पास 5 jobs नहीं होती. I ओके। worked in a daycare. I worked in Wendy's for a few time, like for a couple of time. I worked in special schools in a long term care, and they were really friendly, कि वो कभी नहीं कहेंगे कि आप बाहर जाओ, ओके। कि आप यहाँ से जाओ. वो कहीं ना कहीं they also know कि we do extra work as compared to Canadians, हम्म। because they know that they have to take their days off, they have to go on the vacation, they have to do this, or they or sick leaves or like that. Somewhere they know that जहाँ बात अगर ओवर टाइम की आएगी, जहाँ बात हार्ड वर्क की आएगी, we are always there. So they can never say, or they can never realize कि नहीं, there is a discrimination. Now I work in a long term care, which is a totally different group, like age group, क्योंकि Kingston में it was like with special kids, and here it is like elders with seniors with disabilities and disorders, dementia. So they are so friendly, like even like they just say you are my sister, like sister from another mother, or like they're really like like a family type. So you will never realize whether you will be on like of any job field, if you are working in McDonald's, if you are working in like anywhere, whether your job position is lesser, like even if you are janitor, if you are, I would say janitor like earns way more a lot than us.
ओके। ठीक है, अगर like $20 per hour है, 22 per hours है, they just get $24 per hour, and to bear your expenses, nothing is smaller or lesser in terms of job. Like if as an immigrant you are working as a janitor, ठीक है, वो आपके माइंड में है कि we are into a cleaning thing. They don't feel like that, whether it's any type of immigrant, like not only of India, Any of origin? they have the same, they first of all they don't, like they don't have stereotypical mindset कि this is a cleaning one. They just know that okay, every job should be respectable, and every person is respectable, whether of any country. So they are not like partialized. So your experience of Canada is very good, and I hope it remains same throughout your life. It was pleasure Yeah. talking to you. Okay, and I'll mention your ID if some students want your help, if they want to do go in this field. So मैं आपसे For इनका connect ज़रूर करवा दूँगा. She is very helpful and she's very kind, and I'm 100% sure she will assist you. It was pleasure no talking for to you again. Thank you so much. like Have a good day. Take care. Bye bye. bye bye.